Hello everyone, welcome to our weekly current affairs MCQ series. The first question is, which agreement was signed between India and Pakistan in 1972? 1972 में इंडिया और पाकिस्तान ने कौन सा एग्रीमेंट साइन किया था? ए लाहौर डिक्लेरेशन, बी शिमला एग्रीमेंट, सी दिल्ली डिक्लेरेशन और डी तशकंत एग्रीमेंट. The answer is B. Shimla Agreement. It was signed on 2nd July 1972. It was a peace treaty signed between India and Pakistan followed the Indo-Pakistan War of 1971. 1971 की जंग के बाद इसे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने साइन किया था, जिसे कि हाल ही में पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दिया इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर्स ट्रीटी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मिसाइल्स वर यूज्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन सी मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था? स्कैल्प मिसाइल, कामिकाजी ड्रोन्स, हैमर और ऑल ऑफ द अबव. The answer is D. All of the above. These are precision guided ammunition which made the strikes incredibly effective and largely success against terror infrastructure in Pakistan. खास तौर पर इन मिसाइल्स का इस्तेमाल इसलिए किया गया था क्योंकि इन्होंने सिर्फ टेरर कैंप्स को टारगेट किया और किसी भी सिविलियन या मिलिट्री साइट को नुकसान नहीं पहुंचाया. Now the next question is, who is appointed as the chairman of UPSC? संजय मिश्रा, प्रीति सुदान, राजीव गौबा और अजय कुमार. The answer is D. Ajay Kumar. Former Defence Secretary Ajay Kumar takes charge at UPSC. His appointment sanctioned by President of India after Preeti Sudan tenure ended. अजय कुमार ने हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन के बतौर अपना कार्यभार संभाला. The UPSC is a constitutional body under Part 14 of Indian Constitution. Now the next question is, who becomes the executive chairman of National Legal Service Authority? Justice B.R. Gavai, Justice Suryakant, Justice Sanjeev Khanna or Justice B.V. Nagaratna? The answer is B. NALSA is a statutory body. Full form is National Legal Service Authority. Objective of NALSA is to provide legal aid and also promote settlement of dispute through alternative dispute resolution. President has appointed Justice Suryakant of Supreme Court as the executive chairman of NALSA. Now the next and the last question is, recently diplomat of which country was declared as persona non grata by Government of India? Options are A. Iraq, B. Pakistan, C. China or D. Afghanistan. The answer is B. Pakistan. Persona non grata means unwelcome person, a title a country gives to unacceptable foreign diplomat demanding their departure. हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान के डिप्लोमेट को persona non grata डिक्लेयर किया. Thank you all for watching.